Welcome back to Python Fundamentals, episode 2. I am Aditya Thakur. In our last episode, you set up Python, wrote your first program, and created your first variables. You might remember we ran into something interesting. When we tried to join a number with text using increment, Python threw an error and we had to wrap the number in string. Today, we are going to fully understand why that happened and a lot more about how Python handles data. This episode is about data types, the different kind of values Python works with, how to inspect them, how to convert between them, and where beginners commonly get tripped up. This is one of the most important episode in the whole series because literally everything you write in Python involves some type of data. Code along with me as always. Let's get into it. What we are covering today? Today we are covering integers and floats, strings, booleans, and typecasting. So first of all, we'll start with data type. So what is in data type? It is the concept every other topic today builds on top of. So it is core fundamental. Now let's get into the four core types. First one is int. It is used for integers. Then next one is float. It is used for decimal numbers, like yeah, decimal numbers. Then next one is string. It is used for strings, as I told you in the previous episode. And next one is Boolean. In Boolean, we get the output as true or false. So let's check some data types. Let's create a new file, Python .py. Let's say age is 12. No, class is 12. Oh no, may may class is 2. So let's see here. Oh wait, let's change the age into standard. Standard marks equals uh 80.11. So pass is equal to true. Here it is integer and now it is float. This is Boolean. So as you can see here, name is string and standard is 12, which is integer, and marks is float value, and pass is like true, it is Boolean value. Now we can also check the type of the data type. Uh, to check the data type, we have to like write print type age. Now we'll get the type of age. Run Python. Oh, just give me a error. Wait, there is no age, my bad. Standard. Now let's check it again. Run Python. See, it is giving integer. Now let's check the other values. Print type, then name.
Run Python in terminal. We are getting string value. Now let's check another one. Print type. Then what we are left with? Marks. Let's check next one also. Print type, then pass. Okay. Now run Python. Oh, wait. Pass. Now run Python. See, we got Boolean type. Now, and here we got float. Here we got string, and here we got integer. That's how we can check the data type. And if you want to check the types on literals directly, we can also do that. Like this. See, you can directly write print and then type, then 20, and Python. See, we got integer. Now let's get something else. Print type 20.0. Now let's run it again in Python. We got float, like this. Wait, let me give you an example of string also. Print type, then Adi. Mm, what I'm doing, wait. Then print type, what we are left with? True. Now let's see what it gives in Python 5. See, we got Boolean, we got string, we got float, we got int. See, you get it. We can also combine type inside an f string. For example, let's see, I'm looking at print, then f string, then we'll just enter this, and like the, oh wait, the name is uh, name, and its type is type, and then name. Now let's check this out. Run Python. See, the name is Aditya and its type is class string. Do you remember the error we saw last episode? The same underlying problem worded differently depending on the order. See, on the last episode, what we did, we tried to print integer inside a string, and we were not able to do that because the data type is different. Eventually, what we did, we just converted the data type of that integer into the string, and then we concatenated it. Okay, so it's the same problem over here. See, print age, then plus 25. It will give error because it's not string. Let's try it out. Print uh, standard, then standard. Now let's see what it gives. Oh wait, I forgot to add plus. I forgot to concatenate it. Run Python in terminal. See, the data type is different. See, can only concatenate string, not int to string. What it tells us then, that this is a string. We can't concatenate a string to an integer. We gave a integer value to standard. See, so to do this, what we can do, what we did in last episode, we just changed it into str and put it inside the bracket, and let's see what would happen now. See,
standard 12. So we have to change the type in case we have to concatenate it. So yeah, let's move on to next one. Now, next data type is integers and floats. Uh, for like beginners, numbers seem simple, but they are not that simple. They are more complicated than the beginners expect. First of all, we start with basic arithmetic in integers. See, let's give A is equal to 10, B is equal to 5. Then we'll just concatenate this print. We'll add this A plus B. What will be the answer? It will just add A and B like simple addition. See, we got 15. Now, what we can do? We can subtract it. A minus B. We'll get the normal subtraction. Run Python file in terminal. Then 5. What we got? 5. 10 minus 5, 5. Now, print, print A multiply B. Now run Python in terminal. See, 5 into 10, 50. Now print A divided by B. Now we'll get C 2.2. I forgot to tell you this. When we divide any integer, we get the float value. Okay. Now see, here it is written regular division with slash always returns a float, even when the number divides evenly. Okay. Now new numbers will just this uh, try this with new numbers. X is equal to 15, y equals 25. Now print x plus y, print x minus y, and now print x multiplied y, and now print x divided by y. We'll just get the same output. See, x minus y, 15 minus 25, we got minus 10. X plus y, 25 plus 15, 40. And then 325, then 0.6. That's what we'll get. On to the next one. Negative number division, and yeah. When we divide the negative number, we also get the output in negative, okay? Now, z equals minus 10, y, b equals minus 30. Now, print x divided by y. Sorry, z divided by d. And let's do this print z multiply d. Let's see what we get. Run Python file in terminal. See. Oh, wait. See here what happens. The negative cancels out. As we like in the normal mathematics, we also get the same output. What we'll get? The negative got cancelled, and we'll get this only 0.33. But when we do this, like when we change d is equal to 30, now the output will change. Run Python in terminal. See, we'll get it in negative value. Flow division. See, flow division run towards negative infinity, not towards zero. Negative 10 divided by 3 is negative 4, not. Oh, I forgot to tell you about floor. What happens to floor? What happens when we do this print?
3 //2 run python terminal. See, we got one. In floor, this is the symbol of floor division, okay? Double slash. What happens in floor? So basically, 3 divided by 2 is like 1.5. It goes to the floor value, like the 1.5. 1.5 के नीचे क्या है 1. So ये 1 चल जाएगा, ठीक है? Moving on to negative division and floor division. Print. First, we'll start with negative division. Print -10 divided by 3. Now let's check it. Run Python. We'll get negative value, negative floating value. And what is floor? Let me tell you about floor value first. When we use floor, what happens like जो जैसे 10/3 आया, इसका आया 3.3, ओके, -3.3. फ्लोर वैल्यू जो करता है वो करता है अपने से उस जो वैल्यू उससे छोटी वैल्यू जो होती है ना, इंटी लाइक डेसिमल में होता है ना, तो उससे छोटी वैल्यू 3.3 से छोटी वैल्यू क्या होती है 3, इंटीजर वैल्यू में लेके आता है फ्लोर वैल्यू. और फ्लोर कैसे निकालते हैं हम? प्रिंट 10 डबल स्लैश से फ्लोर निकलेगा, ओके 3. नाउ लेट्स चेक इट. रन पाइथन 3 आ गया इसमें, सी. अगर हम और चेंज करें, प्रिंट 3/2, then let's see what we'll get. Python and Python will get, wait, normal divide कर दिया मैंने गलती से, my bad. Run Python, file in terminal, will get 1. And what happens when we divide this negative value? When we find the floor value of negative integer, 10, 3. Now run Python in terminal, will get -4. क्योंकि 3.3 से छोटी वैल्यू क्या होगी? -4 ही होगी. -3 तो होगी नहीं, -3 होगी उससे बड़ी वैल्यू. सो इट विल गो लाइक दिस. अब एक होता है रिमाइंडर निकालना. लेट्स फाइंड द रिमाइंडर. मॉड्यूलस साइन से निकलता है रिमाइंडर. प्रिंट 10/3. इससे रिमाइंडर निकलेगा. रन पाइथन, सी. रिमाइंडर निकल रहा है 1. विल गेट 1 एज अ वैल्यू. सो ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. Floor division modulo. These are some examples. We can try this. Let's try. Let's just skip this part. We already did this. Now, modulo in real world, even or odd. Okay, now let's see. First, we'll take an odd number and divide it by even. It will give us odd only. For in odd divided by 4, remainder निकालना इसका तो आएगा odd only. See, we got 3 as remainder. And now we'll take even 10, find its remainder 3, and Python, we got odd only. And if we do this with print, sorry, 10, remainder 2, now we'll get even number. अगर हम even को even से करेंगे तो even आएगा, ठीक है? even को odd से करेंगे तो odd आएगा. odd को even से करेंगे तब भी odd आएगा. Now on to the next one. Exponents. We can also calculate exponents. तो उसके लिए डबल स्टार का साइन यूज होता है, ठीक है? जैसे ये है x इक्वल्स टू, डिड वी यूज x? या p इक्वल्स टू. नाउ प्रिंट p 2. ये हो जाएगा p की वैल्यू, p की पावर में 2, ठीक है? तो इसका स्क्वायर हो जाएगा. नाउ जस्ट चेक दिस फर्स्ट. रन पाइथन 5. सी, 2 का स्क्वायर 2. इसको हम और भी कर सकते हैं. प्रिंट p 3 ले लो. आगे इसका
print p 4 ले लो, print p 5 ले लो, वो सिर्फ इसको एक्सपोनेंट में लेके जाएगा, सी बट वी गॉट 4 8 16 32. That's how it works. Yeah, see, you can, as you can see over here. See, raising the power of 0.5 is the same as taking a square root. Yeah. अगर हम उसकी पावर को हाफ कर देंगे, एक्सपोनेंट को हाफ कर देंगे, तो वही हो जाएगा ना, स्क्वायर रूट हो जाएगा उसका. Let's try this one also. Print p 0.5. Now let's check this out. Run Python file in terminal. We got the value. Square root अगर 2 का ही है 1.414. No. Now moving on to the next topic. Here we'll try to mix int and float. See what happens. अगर हम जैसे ही float और int को mix करेंगे ना, like we do any operation with int and float, जो int की जो integer value हो, डायरेक्टली पाइथन जो है वो खुद ही वो उसको चेंज कर देगा फ्लोट में. सी व्हाट हैपेंस. प्रिंट, वेट माय बैड, प्रिंट 15 प्लस 5.00. now run python. सी वी गॉट 20.0. ये खुद ही ऑटोमेटिकली ये 15 को इसने फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया. नाउ लेट्स चेक अनदर वन. 2.0 into 3 and print 2.0 divided by 3. चलो मॉडुलस का तो सेम ही होता है. Let's check this one first. Run. See, we got 6.0, 20.0. That's how we get it. Now, yeah, when we try to like, wait, and if we try to print the type of this, we'll get float only. See, type, type. Now run find the terminal. See, float and float. But when we do this, print type 3 plus 4 on Python, find terminal. See, int. We got int. Now, like across every operator, this works as same. Now, I have a question for you guys. What does floor value of 17 by 5 gives you? And what does floor value of negative 17 by 5 gives you? एक बार ना इसको अपने टर्मिनल में ट्राई करो, फिर उसके बाद लेट्स चेक द आंसर. जस्ट पॉज द वीडियो एंड just try it on your terminal. I'll try it on my terminal. Print 17 floor 5 and print 17 negative 17 floor 5. See what will happen. ये आ गया इसका 3 एंड नेगेटिव 4. इसका वैसे आना था 17 डिवाइडेड बाय 5 का आना था 3 पॉइंट समथिंग. ओके, लेट्स सी व्हाट इट गिव्स फर्स्ट. एक बार चेक कर लेते हैं फिर देखते हैं. इसका है नेगेटिव 3.4, तो इसकी फ्लोर वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, क्योंकि नेगेटिव थ्री तो इससे बड़ी वैल्यू होगी. 3.4 से बड़ी वैल्यू होगी नेगेटिव 3.4 से. सो नेगेटिव 3.4 से छोटी वैल्यू क्या होगी, -4. सो इट विल गिव -4 as we saw. Let's try this out. Run Python. See, we got -4. Now moving on to next one. See, 3 and -4. Now moving on to strings, the data type you'll see and you will use more than any other data type is string. Uh,
will create a string name equals to Aki last name equals to XYZ. No, print name plus last name. Let's see what happens now. Last name. Run Python. File C. Aki XYZ. If we what we did in the previous episode when we wanted to give a space in it, तो हम इसको स्पेस ही डाल देंगे बीच में स्ट्रिंग के बीच में सी and we'll concatenate it. We'll use space as string. Run Python C आगे बस space XYZ. इसका एक बार टाइप भी निकाल देते हैं. Type we got string class. सिंगल डबल कोट्स या इसमें दोनों दोनों ही सिंगल कोड भी यूज कर सकते हो डबल कोड भी यूज कर सकते हो पाइथन डजंट केयर आउटपुट उसका सेम ही आना है एंड फॉर ट्रिपल कोट स्ट्रिंग इट इज फॉर मल्टी लाइन स्ट्रिंग जो लॉन्गर जो टेक्स्ट होगा जितना बड़ा टेक्स्ट उसके लिए ट्रिपल लेट्स चेक दिस आउट आल्सो bio as given as an example by me Aki is a student wait triple quoted होगा इसमें triple quoted Aki is a student which is 12-year old and he studies in sixth class. Now let's check this out. Run Python, file in terminal. See. वो वेट बायो अब इसका बायो का हम एक बार ना बायो को प्रिंट कर लेते हैं प्रिंट बायो and run this. We got Aki is a student which is 12-year old and he studies in sixth class. And let's just check the type of this. Let's see what we get. See, we got string. On to the next one. Concatenation. Yeah, we can also concatenate this. See, I already told you about this. See, when we want to like concatenate this, print string को ना ऐड करना तो ऐसे लिख सकते हैं आकी is 12-year old. ये concatenate भी आता है. Run Python, file in terminal. See, Aki is 12-year old. अगर हम ऐसे लिखेंगे ना फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम वो फुल नेम ब्रोकन ये नहीं आएगा ऐसे उसमें वो नहीं आएगा ना फिर स्पेस नहीं आएगा वी हैव टू ऐड अ स्पेस वाया स्ट्रिंग तो हम बीच में स्ट्रिंग के तौर पे लाइक स्पेस के तौर पे उसको स्ट्रिंग डालनी पड़ती है नो स्ट्रिंग रिपीटेशन हाँ वी कैन ऑल्सो रिपीट द स्ट्रिंग्स लाइक जैसे हमने किया था ना मल्टीप्लाई कर देना है इसको प्रिंट नेम इंटू 3 इंटू कर देते हैं 5 टाइम्स हमें 5 बार नेम चाहिए नाउ लेट्स चेक दिस आकी 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 नेम अब अगर हमें चाहिए होगा इसमें क्या चाहिए इसमें हमें चाहिए स्पेस स्पेस चाहिए तो ऐसे अब लेट्स चेक दिस आउट रन पाइथन वेट
execute this in Python. आकी 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 आकी, इसमें बोर्ड मास का रूल भी यूज हो रहा है ना। नेम अगर मैंने पहले पहले जैसे किया था, तो स्पेस को 5 टाइम्स, जैसे हमने पहले ऐसे किया था ना, विदाउट एनी ब्रैकेट किया था हमने यूज, तो नेम को 5 टाइम्स वो, नेम को सिंगल टाइम कर रहा था और स्पेस को 5 टाइम्स वो कर रहा था प्रिंट। अब हमने क्या किया, हमने इसको ब्रैकेट के अंदर ले लिया। सो नाउ व्हाट इट डिड, इट जस्ट printed the name with space for 5 times. And Python file in terminal, see aki. And now making string and int. Yeah, we can't concatenate string with int. It will give an error no matter how hard you try. A is equal to 10, B is equal to XYZ, print A plus B. It will give an error. See, error throw कर दी इसने directly because int and string, see, unsupported operand types 4 plus. So what we have to do here, str as always. Now let's check this out. See what we get, 10 xyz. String also works on floats and booleans too. We can also convert a float and boolean into string. String in just that str bracket isn't just for numbers, it convert any value into string form. Okay, let's try it out. What we had is, wait, let's just q is equal to 1.0. Now print um add str and str q. Return position. And let's check this out in Python. See, I am at 1.0 position. इसको इसने जो है इसको भी वो कर दिया, कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग फॉर्म में. ओके, now let's say this for this Boolean expression. Uh, like what we get, QR is equal to, wait, valid equals true, print the QR is valid. Now increment str valid. Let's see what we get in Python. See, we got the QR is valid and then we got Boolean expression true. But ऐसे तो हो नहीं सकती concatenate without string str यूज किए. सी, दिखा देता हूँ एक बार तुम्हें एग्जांपल के लिए. रन पाइथन. सी, दे दिया इसने कि भाई इसको हम नहीं कर सकते यूज विदाउट str. We can't concatenate string with any Boolean expression. First we have to change it into str like this only. So now we are gonna talk about f strings. F string जो है वो without any concatenation and without any string conversion जो है तुम्हें जो है प्रिंट करने देती है. ठीक है, तो इट इज वेरी क्लीनर. हमें बार बार कॉन्केटिनेट विदाउट एनी एडिशन मार्क किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. एक ही बार एफ एफ डाला, एफ के बाद दो कोटेशन डाले, कोटेशन के बीच में लिख दो. एज सिंपल एज दैट. सी, here is an example. Let's try out this example. Oh wait, name equals Sam, age equals 12. Now print f.
name is age years old. Now let's check this out in Python. See, Sam is 12 years old. See, same as this. स्ट्रिंग जो है एक्सप्रेशन भी होल्ड करता है, सिंगल वेरिएबल भी करता है एक्सप्रेशन, मतलब वेरिएबल्स के साथ साथ एक्सप्रेशंस भी होल्ड कर सकता है जो स्ट्रिंग। ठीक है, यू कैन ऐड इनसाइड एन स्ट्रिंग लाइक, पर उसके अंदर भी हमें कर्ली ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे। लाइक इसमें जैसे एग्जांपल दिया है age+1, यू कैन मल्टीप्लाई। लेट्स टेक एन एग्जांपल। वेट, व्हाट प्रिंट एफ, ओ वेट, आई एम आई एम studying and वेट, एज पहले से ना, आई एम age +7 years old. Now let's check this out on Python. What happened over here? Syntax is any other syntax. It's same. Oh wait, this is wrong. See, I am 19 years old. We got that. So now we are moving to string length and indexing. Here we'll learn about how to find string length and how to find the indexing. Indexing means the position of the like letter inside the string. For example, see, name equals Aditya, and let's suppose we want to find the length of the string. Length, then name, then run Python. See, we're getting the length 6. Now comes the Boolean part. Boolean consists of two values, either true or false. Now let's write a simple code in Python for Boolean. String equals true, is sum equals false. Now just now let's print the type of this is string is Sunny. Wait, I have made a mistake. I wrote spelling of type wrong. See, we got the class Boolean type. Booleans are, we get the Boolean value when we like compare something like this. Print 5 is greater than 4. Now run Python. See, we got true. Print 0 greater or equals to 0. We also got true. Here we got false. So yeah,
when we want to compare, we'll get when we are comparing something, we'll get boolean value. Okay, see, print 5 equals 5, will get true. What happened again? Oh wait, equals. Here we go true. Now print uh 5 not equals to, not equals to. सी, ये वाला जो है ना, ये क्या बोलते हैं, दिस इज फॉर नॉट इक्वल्स टू, ये है इज इक्वल टू, ठीक है। इसमें मतलब डेटा जो ये डबल इक्वल्स टू है, इसमें डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए और ये वैल्यू भी सेम होना चाहिए इसमें, इसलिए होता है। ये तो आपको पता ही होगा, दिस इज फॉर ग्रेटर देन, दिस इज फॉर ग्रेटर देन और इक्वल टू, दिस इज फॉर ग्रेटर देन। नाउ लेट्स do this also. 5 less than 7, run Python, will get true. And now let's see the next one. See, double equals check equality, a single equal is assignment. Like I did a error. I wrote single equals, which gave me an error. It is for assignment. 5 equals 5 is for assignment. Now let's compare string. So print Aditya equals Aditya in Python. Here we go true. Print Adi equals Aki. Here we get false. Here false. Print Adi greater than equals to Aki. Here we got false. एंड ये जो ये है ना, डबल इक्वल्स टू, ये केस सेंसिटिव भी होता है। लाइक यू राइट प्रिंट आदि इक्वल्स आदि, ये हमें देगा फॉल्स। केस सेंसिटिव होता है, ये अपर केस होगा तो फिर ये अगर एक अपर केस होगा तो दूसरा भी अपर केस होना चाहिए, अगर एक लोअर केस होगा तो दूसरा भी लोअर केस होना चाहिए। So now let's take a real life example. We'll take an example of voting eligibility. Let's suppose मेरी एज है 19, then can vote equals age, this is greater than equals to 18, print करना है हमें can vote. We'll see what happens now. See, we got true. It means the person is eligible for voting. So now comes the part of typecasting. Here we'll learn about converting values between int, float, string and boolean. हम इसमें पूरा पूरे मतलब हर एक डिफरेंट डेटा टाइप को डिफरेंट डेटा टाइप में कन्वर्ट करना सीखेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लर्न अबाउट कन्वर्टिंग बिटवीन टाइप्स। लेट्स लर्न अबाउट इट्स बेसिक्स। पहला ये एग्जांपल, यही एग्जांपल ले लेते हैं हम। लेट्स टेक एन एज व्हिच इज इन स्ट्रिंग, एज इक्वल्स 25। अब इसको ले लेते हैं हम एज, इसको स्ट्रिंग से इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इंट लगाएंगे, फिर ये एज लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा इंटीजर में कन्वर्ट। नाउ प्रिंट एज एंड प्रिंट
age plus 5 and now print each type of age. Now let's see what we get. See what we got. Here age integer, ठीक है, इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया हमने 25 में, 25 प्लस 5 हो गए, 5 के बाद फिर टाइप भी हो गए इंटीजर, इंटीजर में कन्वर्ट हो गए। अगर हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट नहीं करते, लेट्स सी व्हाट वुड हैव हैपेंड। एक बार वो करते हैं, इसमें पूरा एरर आ जाना था। सी एरर आ गया क्योंकि ये तो स्ट्रिंग में है। वी कांट concatenate a string with an integer as I told you earlier. So yeah, now let's see if we can convert the string which is in float into an integer. Okay, ये वैसे फ्लोट है, अंदर इसके अंदर फ्लोटिंग नंबर है, बट इसको हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया हुआ है, स्ट्रिंग के अंदर डाला हुआ फ्लोटिंग को। इसको हम इंटीजर में नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे, इट विल गिवन एन एरर। सी 0.00 1 control Z, wait, type of एक उसका टाइप भी लिख लेंगे हम। then what we'll do, integer 20.01, let's see what it gives. सी इट विल थ्रो एन एरर। ऊपर इसके क्या आ रहा था, स्ट्रिंग टाइप था, ठीक है। यहाँ पे जब हमने किया था ना, ये स्ट्रिंग का आ रहा था। इसके ऊपर एज एज का टाइप हमने क्या निकाला था, इंटीजर। इसके नीचे आ गया स्ट्रिंग। फिर अभी ये तो एरर डालेगा कि ऐसा आई टोल्ड यू अर्लियर कि हम अगर किसी लाइक स्ट्रिंग के अंदर कोई फ्लोट नंबर होगा तो उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे हम इंटीजर में, इट विल थ्रो एन एरर। So to overcome this issue, what we need to do first? We need to convert this into a float number. Okay, float number itself ही पहले से float के अंदर है, but ये float number जो है string के अंदर है, तो हमें ये string को ही float में convert करना पड़ेगा, फिर उसके बाद we can convert it. See, now let's see, इसको हमने float में convert कर लिया. Now what we'll do? We'll convert it into integer. सी अब इंटीजर में कन्वर्ट होगा ना 20, इसने इग्नोर कर दिया 1, 0 1 इग्नोर कर दिया, फिर हमने इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। Let's move on to the next one. See, same is given over here. Convert the string into float first, then to an int. This correctly drops the decimal. Decimal part ये drop कर देता है हमारा पूरा ये. Now let's convert float into int with the help of truncation. Print round 20.01. We got 20. ये राउंड अबाउट कर लेता है पूरी वैल्यू को, ये पूरी वैल्यू राउंड अबाउट कर लेगा। लेट्स जैसे इसमें दिया हुआ है ना, इंटीजर प्राइस 19 हो गया, ये तो इसमें तो हमने इंटीजर में किया है, बट ये राउंड अबाउट कर लेगा। सी इफ वी इफ वी डू इट लाइक दिस 20.99, तो ये इसको 21 में ले जाएगा। और मतलब अगर ये 20.5 से ऊपर की वैल्यू है अगर, तो ये राउंड अबाउट करके 21 कर देगा, और 5 से नीचे की वैल्यू है तो राउंड अबाउट करके नहीं 20 रखेगा, ठीक है। लाइक वी डू इन बेसिक मैथ्स, जब हम किसी चीज को किसी का राउंड ऑफ निकालना होता है तो हम वैसे ही करते हैं सेम, कोई बिगर कैलकुलेशन आती है तो। 20.7, राउंड अबाउट ऑफ 20.7, इसका भी सेम ही करेंगे, राउंड करवाएंगे, ठीक है। राउंड ऑफ 20.7। नाउ अगले का भी यही करेंगे हम, राउंड ऑफ लाइक इसका हम 20.6 कर लेते हैं एक को, और एक को कर लेंगे 20.4।
ताकि कोई कंफ्यूजन रहे आप लोग। राउंड ऑफ 20.4, now let's see what it gives us. See what we get, what we got, 20.01 क्या है, 20, 20.99 क्या आ गया, 21, 20.07, 21, 20.7 का आ गया 21, 20.6 का आया 21, 20.4 का आया 20। नाउ लेट्स चेक ऑफ 20.5, print round now 20.5, इसका 20 है 20.5 का, ठीक है। इंटीजर ना राउंड राउंड नहीं होता, ठीक है। इंटीजर की वैल्यू हो ही नहीं पाएगी राउंड, इंटीजर राउंड किसका करते हैं हम, फ्लोट का ही करते हैं राउंड ऑफ। अब हम सीखेंगे राउंड ऑफ करना, कोई जैसे डेसिमल वैल्यू को ये डेसिमल के अंदर राउंड ऑफ करना सीखेंगे हम। जैसे कोई बड़ा डेसिमल है उसको छोटे डेसिमल के अंदर राउंड ऑफ करना सीखेंगे। लाइक वी गेट नंबर डी इज इक्वल टू 20.0010021। नाउ हम करेंगे इसका राउंड ऑफ, प्रिंट राउंड डी कोमा, इसके दो वैल्यू तक करेंगे डाउन, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट वी गेट, क्या आ गया, 20.00 आएगा वैसे तो, सी जीरो ही है ना, आगे तो फिर शो नहीं हो रहा कुछ। लेट्स सी, 01 आ गया। पहले पहले जीरो क्यों आ रहा था, सिंगल जीरो क्यों आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे भी जीरो था, इसको इसकी वैल्यू को जीरो का कोई वो ही नहीं हो रहा, फायदा नहीं रहा, तो इसलिए शो नहीं किया इसने पाइथन ने। सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, विच इज बूलियन कास्टिंग एट ट्रूथनेस। इसमें क्या होता है, अगर हम जैसे जैसे कोई जैसे कोई वैल्यू रखेंगे स्ट्रिंग के अंदर, और वन लिखेंगे, एक्सेप्ट जीरो, कोई भी वैल्यू रखेंगे, और एक्सेप्ट जो खाली स्ट्रिंग है उसके अलावा कोई भी वैल्यू रखेंगे तो उसमें आएगा ट्रू। और अगर हम जीरो रखेंगे और एक एम्प्टी स्ट्रिंग रखेंगे तो उसमें हमेशा फॉल्स देगा वो हमें। लेट्स चेक इट आउट। प्रिंट वो, पहले जीरो करते हैं एक बार। सी, इट गिव अस फॉल्स। नाउ लेट्स चेक, प्रिंट bool hello world, let's check this. See, it gave us true. Now let's check print bool true, ये भी हमें टू ही देगा, ट्रू देगा वैल्यू। अब चेक करते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग, ओके, दिस विल गिव अस फॉल्स। वेट, bool, अब चेक करते हैं। सी, इसने हमें फॉल्स दे दिया, वी हैव मेंशन, आई हैव मेंशन इन माय पीपीटी, zero and empty string acts like false even though they are not literally the Boolean false. This is called truthness. We'll use this constantly starting in episode 5. Yeah. Now let's see where the casting fails completely. See, हम कभी भी ना जो string value है, जैसे string में जो होते हैं ना alphabets को we can't convert them into integers, or we can't convert them into float value. Let's try. Hello world, एक बार ट्राई करते हैं, run python। सी, दे दिया इसने, एरर एरर दे दिया। और एल्स इसको फ्लोट में भी देख लो एक बार आप, फ्लोट में भी एरर देगा ये। सी, वी कांट चेंज इट, इसमें टाइप कास्टिंग फेल हो जाती है। Python won't guess if a string doesn't looks like a valid number, casting raise a value error instead of failing silently, okay। ये वैल्यू एरर देगा ही देगा आपको, no matter what, because we can't change a string into integer or a string into float. Now let's move on to the practice question, which is take the string 3.14, convert it into a float,
then multiply it by 2 and print the result. First of all, try it by yourself, then you can look into the screen. Take the string. What's the question? Take the string 3.14. String equals to 3.14 float of string equals to float multiply by 2. मैंने थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक कर दी है इसमें, बट इट विल वर्क. 6.28 आ गया इसका आंसर. देखिए पहले इसमें क्या हुआ, पहले हमें वैल्यू दी थी 3.14, फिर हमने इसको किया फ्लोट में कन्वर्ट फर्स्ट, फिर इसको फ्लोट में कन्वर्ट करके हमने इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, फिर ये प्रिंट होगी वैल्यू. सी इट्स द सेम. नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन. What's the question? Create a product price as float, create a quantity as an int, calculate the total cost, print it as a sentence round to 2 decimal places. Bonus. Print whether the total is $10 as boolean. आपने इसको पहले पोज करके देख लो एक बार, उसके बाद आप सोल्व करना, उसके बाद सॉल्यूशन देखना. ओके, आई ट्राई इट आउट. प्राइस दे देते हैं 2.4, 5 पॉइंट समथिंग देता है, 5.3 देते हैं. नाउ क्वांटिटी दो दूँ, क्वांटिटी इज इक्वल टू 2. नाउ टोटल इक्वल्स प्राइस मल्टीप्लाई करो क्वांटिटी. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, print it as sentence on 2 decimal places. Okay, print total is how much dollars? Total is dollars. स्ट्रिंग में होगा ये, स्ट्रिंग में राउंड करना है, राउंड टोटल इनटू दो दो डिजिट में राउंड करना है. ठीक है. एक्सपेंसिव इक्वल्स टोटल ग्रेटर देन 10, current over $10, plus string of expensive. Now let's check the answer on Python. इसमें देता हूँ what was that string. Oh, 3.14 command. Now let's check this one. Run Python. See, what was the total price into quantity? Total and over $10 true. Total is 10.6. 10.6 total आ रहा है तो ये true आ रहा है. ठीक है. See, I did the same thing. Price, quantity, total price into quantity. Then your total is C, is expensive equals total greater than 10, print over $10. String is expensive. Okay. Before ending this episode, let's just
practice out some questions. First of all, this question, what does type 10.0 return? Let's check it out. Print type 10.0, एक ही साथ में चेक लेते, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे इसे, आउटपुट ऑफ प्रिंट 15, क्या है क्वेश्चन, क्या है 15 फोर, फ्लोर निकालने इसकी फ्लोर वैल्यू इसकी है प्रिंट 15, इसमें रिमाइंडर निकालना है, ठीक है बेटा। इसमें हमें डिफरेंस निकालना है। इसमें क्या होगा डिफरेंस, शो गाइस, कंट्रोल सी, वेट, सी, इसमें डिफरेंस क्या होगा, इसमें पाइथन जैसे ही है ना, इसमें होगा स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग और ये दोनों स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट होकर ये पाइथन बन जाएगा। वेयर एज इन दिस वन, ये जो ये सिंगल स्ट्रिंग है, ये सिंगल स्ट्रिंग की 3 बार मल्टीप्लाई होगी, 3 बार, फिर वही हो जाएगी ऐड। आई शो यू गाइस। तो ये पी वाई बन जाएगी ये, सॉरी, सी, पी वाई देन पाइथन, देन फ्लोर वैल्यू ऑफ दिस, ये 3 आ गई, इसकी क्लास है फ्लोट, देन दिस इज पाइथन। And that's a wrap on episode 2. Let's do a final gut check. If you could confidently answer most of those review questions we just went through, you have genuinely got a solid grip on Python core data types. If a couple tripped you up, that's completely normal. Just go back, rewatch that specific section, and try the code yourself before moving on. That struggle is exactly how this sticks. Quick recap of the ground we covered today: integers and floats, including floor division and modulo strings, concatenation, repetition, and some built-in method, and f string with format specifiers, then Boolean comparison and a couple of fun quirks along the way, and typecasting, including exactly where it can fail and why. In episode 3, we are going deep into operators, arithmetic, comparison, and logical operators, and something called operator precedence, which we have already tested a couple of times today. That's where expressions like 2 plus 3 into 4 finally get the full explanation. Okay. If this episode helps you, hit like, share, subscribe, and drop a comment if any of today's review questions stumped you. I read everyone, and it helped me know what to slow down on in future episodes. See you in episode 3. Bye bye.